say this is understand what is meant by junction also, right? है ना, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. अगली पार्ट चलिए. Gap junctions. These are very tricky junctions. Okay, so the name is gap. So I have to make my cells at a gap. My cell should be at a gap like this. Okay, so this is one wall. I'm just making one wall of my cell. Okay, and this is another wall from the next cell. Say this is the another wall. So this is my next cell. Okay, so you understand it is like this, right? Now, why is it called a gap junction? क्योंकि दो cells थोड़ा gap पे होते हैं. Now, surprisingly, there are channels in between these two cells. There are beautiful channels here, channels, and these channels are opening up here like this very beautifully they are opening here, and they are opening there also. There is a gap, but actually gap तो सिर्फ ड्रामा था. ये यहाँ पे channel provide कर रहा है. उस channel का फायदा क्या है? The cytoplasm of this cell can travel through this gap junction and go into this cell. Small ions can go, then small molecules can pass through these gap junctions. So you understand, gap दिखा हुआ है, actually बीच में tunnels बनी हुई हैं. These tunnels, sorry, these tunnels here like this, they are made up of proteins. They are made of proteins called connexins, but need or aims में ये protein का नाम नहीं आएगा. So let's leave the name. But you understand gap junctions. Now where would you find gap junctions? Where you have to transport something between the cells. I'll give you an example. In the tissues where there is no blood supply, एक टिश्यू में blood supply नहीं है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह आप कैसे पहुँचाएंगे? वहाँ पे एक टिश्यू होगा जो उसके साथ में होगा, इसके पास न्यूट्रिशन है, ब्लड है, तो आप यहाँ से न्यूट्रिशन इस सेल में पहुँचाएंगे, इस सेल से अगले सेल में न्यूट्रिशन कैसे पहुँचेगा? गैप जंक्शन से पहुँचेगा. सो यू अंडरस्टैंड, एवेस्कुलर टिश्यूज में गैप जंक्शंस होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका आई में जो लेंस होता है और कॉर्निया होता है, लेंस कॉर्निया, इनफैक्ट आपका पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर है. एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इनमें तो गैप जंक्शंस मिलेंगे क्योंकि चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी सेल टू सेल आगे, राइट? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हार्ट. नाउ हार्ट में क्या सिग्निफिकेंस है गैप जंक्शन की, वो आप तब जानेंगे जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे साथ पढ़ेंगे एंड हम उसमें हार्ट स्टडी करेंगे. सो गैप जंक्शंस विल लुक समथिंग लाइक दिस. आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस डायग्राम नाउ. ओके, सो दीज आर द चैनल्स, जो कि देखिए दिस इज द गैप बिटवीन द टू सेल्स एंड द चैनल्स आर जॉइनिंग दैट गैप. इजी पीजी, आगे चलेंगे. डेस्मोसोम्स, वेरी नाइस. सी, दिस इज वन सेल, this is one cell, okay, and I want to make a 3D diagram for this cell, okay, somehow, okay, I hope I'm trying my best to make. रुक जाओ. Okay, now it is better. It's a cell and I have a neighboring cell for it. Neighbors बहुत important है जिंदगी में. ये लो, एक neighbor बना लो. This is a neighboring cell. Now कितनी जगह ऐसे खिंचने को होते हैं सेल्स आपस में, है ना? जैसे कि आपकी स्किन होगी, कितना आप रब करते हो तो क्या आपके सेल्स अलग होकर टूट के गिर जाए? दे आर कनेक्टेड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, है ना? सो दिस कनेक्शन, जो इतनी स्ट्रांग कनेक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, दिस इज, सी वेरी केयरफुली, दिस इज द इनर साइड ऑफ द सेल. यहाँ पे इनर साइड पे एक प्रोटीन लग जाता है इस तरीके से. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड द प्लाक. ओके, सिमिलरली इस वाली वॉल के इनर साइड पे यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होगा इस तरीके से. आई कैन कॉल इट द प्रोटीन प्लाक. लिख दो इसे, प्रोटीन प्लाक. ओके, सिमिलरली हियर प्रोटीन प्लाक. नाउ certain more proteins are going to come out of this plaque like this. I think I would make it very nicely अगर मैं ये 3D में ना बनाती तो डायग्राम. Certain proteins will come out of it like this. Okay, ये प्रोटीन्स क्या है? इस प्लाक में embedded है और बीच रास्ते में पहुंच गए हैं. Similarly कुछ प्रोटीन्स इधर से आएंगे. They are embedded in this plaque and they will join with these proteins like this. And these proteins will join hands like this. Okay, this might not be very clear. Can I make you another diagram? Okay, I want to make another diagram. Maybe this time I'll be more clear. Wait. So एक और डायग्राम इसके साथ में बना रही हूँ. See here, this is one cell and this is another cell. So I have a protein plaque here. There is a protein plaque here on the inner side and there is a protein plaque here on the inner side. Now इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर है वो, है ना? दोनों साइड पे ऐसे प्रोटीन प्लाक है और प्रोटीन प्लाक में से कुछ और प्रोटीन्स निकल रहे हैं इस तरीके से, जो कि बीच में जाके इस तरीके से खत्म हो जाते हैं ऐसे, और इस साइड से कुछ प्रोटीन्स निकल रहे हैं ऐसे, एंड दे आर होल्डिंग हैंड्स विद दीस प्रोटीन्स लाइक दिस. नाउ अब जब आप इन सेल्स को अलग करोगे तो ये अलग नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है. सो यू आर नॉट एबल टू सेपरेट दीस सेल्स. एक खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन प्रोटीन प्लाक्स में अंदर की साइड पे कुछ फिलामेंट्स इस तरीके से लगे होते हैं, इनसे अटैच हुए होते हैं. आई नो आपको नहीं पता है क्या है, इससे डरने की भी जरूरत नहीं है. दे आर सिंपली स्मॉल फिलामेंट्स मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन एंड दे आर कॉल्ड, आई फॉरगॉट देयर नेम. दे आर नॉट कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स, दे आर कॉल्ड, गिव मी 1 second, लेट मी चेक देयर नेम. Yes, found it. Intermediate filament. I'm so sorry. These filaments are called intermediate filaments. Filaments and they are made up of keratin. देखिए ये नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये फिलामेंट्स कौन से लगे होते हैं और इनका क्या नाम होता है, पर एम्स वगैरह में हम कभी-कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो हमें क्या याद रखना है? डेस्मोसोम्स आर फॉर अटैचिंग द सेल्स टुगेदर. दे आर ऑन वन साइड, तो मतलब सेल, ये एक, ये सेल, एक, ये सेल, एक, ये सेल, तो ये साइड से ऐसे डेस्मोसोम से अटैच होंगे. समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये फिलामेंट का नाम. ओके, एंड यू विल फाइंड इट वेयर थिंग्स आर स्ट्रेचिंग लाइक ऑन स्किन, लाइक योर हार्ट. आपका हार्ट ऐसे हो रहा है तो क्या हार्ट के सेल्स बिखर के दूर गिर जाए? ऐसा नहीं होता ना. सो ऑन स्किन, इन हार्ट, मसल सेल्स आपस में अटैच होते हैं इसकी हेल्प से. आई होप दिस इज डन. कैन आई मूव फॉरवर्ड? So this is a diagram of a desmosome which I just आपने अभी देखा है. This is one protein plaque, this is other protein plaque, this is intermediate filament, and these are the proteins. Now these proteins जो अंदर वाले proteins होते हैं इनको cadherin protein कहते हैं, but trust me you don't require that. So just leave it. Okay, आगे चलो. Okay, so now
We have very less time left, so let's hurry up with the last two junctions. Important because all cell junctions are important. You have to listen to me very carefully. Adherence junctions. Adherence junction भी वही काम करते हैं जो desmosome करते हैं, लेकिन adherence junction का तरीका अलग है वही काम करने का. Understood? वो भी cells को adhere करके रखते हैं, पास लगा के रखते हैं. Okay? देखो adherence junction और उसमें क्या फर्क है मैं बताती हूँ. Strongly hold करके रखते हैं ये भी cells को. एक cell है मान लो इस तरीके से. Cell के चारों दिशाओं पे ये प्रोटीन प्लाक लगा होगा. डेस्मोसोम में तो सिर्फ एक साइड पे प्रोटीन प्लाक लगा होता है, दो साइड पे, एक साइड पे, एक साइड पे प्रोटीन प्लाक साइड साइड पे होता है. इसमें इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक साइड पे चारों साइड पे ऐसे प्रोटीन प्लाक लगा होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे. यू कैन इमेजिन जैसे आप बेल्ट पहनते हैं अपनी कमर के राउंड, ठीक है, आपने पूरा कमर पे ऐसे बेल्ट लगाया ना, वैसे इसने भी अपनी कमर पे एक बेल्ट पहनी हुई है प्रोटीन की, लेकिन अंदर की साइड से, साइटोप्लाज्म की साइड से. ओके, सो दिस इज द प्रोटीन प्लाक. नाउ लेट मी मेक अनदर सेल. Similarly, this cell has the protein plaque, which is like a belt around it, like this, like that, on all four sides. And on all four sides, this is projecting proteins like this. And from here also it is projecting proteins like this. And here also it is projecting proteins like this. And on back side also. And this cell is also projecting proteins like this, and it is holding it with these, and then here also, and then here also, and then there also. So you understand, the cell, अब cell ने चारों तरफ से पकड़ने का निश्चय कर लिया है. इधर से भी सेल को पकड़ेगा, इधर से भी सेल को पकड़ेगा, टोटल पकड़ लेगा, यहाँ से. Understand? So this is somehow जैसे adherent junction दिखता है. ये मिलता है आपको जैसे small intestine में peristaltic movement होती है, तो cells को इकट्ठे पकड़ के रखता है. So I can write small intestine here. इसके अंदर कुछ प्रोटीन के फिलामेंट लगे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होते, छोटे छोटे एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, उनको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट, ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि ये नीट में आएगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेक इट. यहाँ पे छोटे छोटे फिलामेंट्स अंदर की साइड लगे हुए हैं इस तरीके से, एंड दीस फिलामेंट्स आर कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स. डन. नाउ फॉर द लास्ट सेल जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम. व्हाटएवर यू डिड इन डेस्मोसोम, डू इट हाफ. हेमीडेस्मोसोम. So desmosome cell to cell connection के लिए होता है. Hemidesmosome is between cell and basement membrane. Now you don't know what a basement membrane is. सभी epithelial tissues के नीचे एक non cellular layer होती है जिसको basement membrane कहते हैं. Every epithelial tissue will have a non cellular membrane. This I'm trying to make a basement membrane like this, and the cells of epithelial tissue are on this membrane like this. Of course the cells are not transparent and अंदर से नहीं दिख रहा, but it's a crude diagram, but you understand what I'm trying to say. Okay, if you don't understand, I will delete it. Now I'm happy. So epithelial tissue basement membrane के ऊपर ऐसे लेटे होते हैं. This is basement membrane. Now हेमीडेस्मोसोम की खास बात क्या है? डेस्मोसोम में दो तरफ से प्रोटीन प्लाक था, हेमीडेस्मोसोम में सिर्फ एक तरफ से प्रोटीन प्लाक होगा. नाम से ही पता चल रहा है हेमीडेस्मोसोम का नाम है. अब मान लो ये सेल है कुछ ऐसा. Let me okay. Not very nice, but you can imagine it in 3D, right? Now there is a plaque only on one side. So there is a protein plaque here. I have to make it in another color now. There is a protein plaque on one side, not on both sides. क्योंकि नीचे तो कोई सेल ही नहीं है ना, basement membrane है. And there are proteins going from here like this. Okay, and these proteins are embedding in the basement membrane like this. So same चीज है डेस्मोसोम जैसा, लेकिन इस साइड से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. डेस्मोसोम में तो दूसरे सेल ने भी प्लाक बना के अपने प्रोटीन भेजे थे ना, इसने भेजे नहीं. सो ये अंदर जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे जैसे कि डेस्मोसोम्स में थे. सो हेमीडेस्मोसोम्स का काम क्या है? टू एंकर द एपिथेलियल टिश्यू टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. लिख दो, टू एंकर द एपिथेलियल टिश्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. I hope these are very clear, very nicely clear in your brain, because इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है, एम्स में भी आ सकता है. आज की क्लास में आई एम गोइंग टू फिनिश टुडेस क्लास. अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, यू कैन पुट योर क्वेरीज बिलो, कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी. यदि आप इसी प्रकार से पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे पढ़िए, तो आप प्लस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए सिंपल सी बात है, ऐप डाउनलोड कीजिए, प्लस के सेक्शन पे जाइए.